Guys, after again, welcome to this is like Sittong part 2 and ये अपनी भुटकी इधर ओके सो अभी हम लोग सिटोंग राइड के लिए कुछ प्रिपरेशन की है. सो बेसिकली व्हाट वी हैव बाइड, लेट मी शो यू. कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट गेस लाइक क्या क्या. सो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें बाय किया है फॉर योर कन्वीनियंट. लेट मी गेट बैक टू यू and let me get back all the things. So just a second. मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तू बोल मैं रिकॉर्ड करती हूँ. So हाँ, अभी रुक जा, अभी मैं इंट्रो खुद का दे लूँ, उसके बाद दे करना. अभी हैंड ओवर कर रहा हूँ मेरे कैमरा मैन, इसको कैमरा पकड़ना आता नहीं है, दो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो ये आपसे वीडियो कॉपी करने वाली है. So guys, as मैंने ये अच्छे से लूँगी, सच्ची इस बार अच्छे से लूँगी, तब वो गलती से हो गया. ये अपनी कुछ प्रोडक्ट आ चुके हैं. इधर भुटकी भाग रही है, इससे कैमरा का कुछ हुआ नहीं, ये भाग गई. सो फॉर द राइड आप लोगों के पास मेरे पता है मेरे पास BMW G310 RR है, एज वेल एज अदर्स बाइक भी है. सो फॉर स्पोर्ट्स मॉडल मैं पीछे टेल बैग ढूंढ रहा था, बट टेल बैग का लगाने का प्रॉब्लम है एंड ऑल द थिंग. सो आई गॉट अ वेरी गुड बैग एंड गो गाइज, गो टू बाइकर्स टाइम, जो कि आगरपाड़ा में दोस्त है मेरा रिपॉन. यू कैन बाई द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर. सो दिस इज़, यू कैन सी, दिस इज़ द क्लॉ मिनी फ्रॉम वाइटाड़ा. Let me show you, this is the full set and let me tell you how to strap it and all the things. It is very good and ये price अगर आप देखोगे तो MRP is near about 3899 somewhere. मेरे को डिस्काउंट देकर अच्छे प्राइस में पड़ा. यू नो बाइक की प्रोडक्ट की उतनी वो नहीं होती है. देन ऑल्सो आई गॉट इट एट अ वेरी गुड प्राइस. एंड व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ इट, लेट मी शो यू. ये अपनी ओपन कर ले रहे उसके स्ट्रैप को. जस्ट सेकंड, कैमरा स्लिप आउट हो गया. ये स्ट्रैप को ओपन कर लेते हैं, वाइट आर बैग, एंड इट इज़ रियली 100% वाटर प्रूफ. आपको ऊपर एक चेन मिल जाता है कुछ भी रखने के लिए, एंड दो यहाँ पर आपको चेन मिल जाता है. एंड दिस इज़ द मेन वन. अब अगर देखोगे, दिस इज़ द मेन वन. इसको, इसमें भी स्ट्रैप ऑन है, इसको स्ट्रैप आउट करोगे एंड ओपन इट, तो इट इज़ अ वाटर प्रूफ. अंदर का जो रेन लाइनर होता है, तो इसमें एनफ स्पेस है, मोर देन एनफ स्पेस है. आपको कुछ भी लेने के लिए एज यूजुअल आप ले सकते हो. आप देख पा रहे हो कि हाँ पूरा स्पेस है. एंड जो कि मेरे को सबसे बढ़िया लगता है क्लॉ बैग का, आपके पीछे पिलियन नहीं है तो सीट के ऊपर रख के ये दोनों साइड से पूरा प्रॉपर आ जाता है. एंड इसके स्ट्राइपिंग के लिए दो चीज़ें हैं. ये आपका पीछे चला जाता है स्ट्राइपिंग के लिए, तो ये जो स्ट्राइप है ये सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पर आपको स्ट्राइप के लिए ये मिलता है. ये देख पा रहे हो, ये आपका टेल का जितना भी है, ये तो मैं आपको एपिसोड 3 में दिखाने वाला हूँ, जब एपिसोड 4 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पैकिंग वगैरह करने के बाद. एंड यहाँ से दो सामने लेग स्टैंड के इधर लग जाता है. तो कोई भी स्पोर्ट्स मॉडल हो, इट कैन बी R15 जिनकी लाइक सीट कटी हुई है एंड थोड़ा सा ऊपर साइड में, आई प्रेफर टू गो विथ क्लॉ बैग. दिस इज़ द क्लॉ मिनी. क्लॉ के और भी टाइप का आता है, वाइटारा का और भी सारे आते हैं, बट चूजिंग बिहाइंड दिस क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. एंड आई गॉट अ रेन गियर फ्रॉम हियर. दिस इज़ द रेन कोट फॉर दिस बैग. मैंने रेन कोट खोल के भी नहीं देखा है. सो इट्स अ गुड रेन कोट. बाद में देख लेंगे इसको खोल के, जब लगाना होगा वैसे लगा के देंगे. एंड व्हाट आर द प्रिपरेशन राइट नाउ वी आर टेकिंग, लेट मी शो यू. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कीप द phone here. Let me keep the phone here. I don't have my GoPro right now, so it's problematic. So let me just fold it quickly and keep it inside it. And the second thing which I got is this one, which is the Petronics tire TPM machine. Let me show you. I got it from Blinkit at 1700 something price. It's a good product. You can see, let me do, like I tried, I will show you the video. If I on it, you can see the TPM machine, the pressure and everything is set for basketball. You have the car, you have the bike, you have the bicycle, as well as you are having the lights. You can see the red light for the blinkers and all the things, and it's very powerful, as well as it is having nearly about let me show you the specification for it. It is having the 2000 mAh battery into 2, which is nearly about 4000, and goes up to very well quality, as well as you can see auto shut off.
easy carry LED lights and type C charging. Well, it's a good one, and this time the packing is going to be a little bit one. I brought inner liner. The one of the inner liner is from Rida. This is the pant inner liner. If you can see, base yeah, this is actually the base layer, not the inner liner. Base layer for XL bottom, and this is the Vapor Pro from Rhinox, which is the performance base layer. And literally telling you guys why to carry base layer. Let me tell you, base layer makes your jacket life more like आप जो भी जैकेट पहन रहे हो उसकी लाइफ बहुत आगे कर देती है, क्योंकि वो पसीना वगैरह जो भी होता है. एंड फॉर दिस राइड आई एम यूजिंग द लोन रेंजर जैकेट as well as the riding pant from the Rhinox GT Pro, and my hand gloves will be from Rida. Along with we will carry our drone and GoPro. Right now GoPro is not with me, it will be delivered soon from one of my friend or eldest brother house. Meanwhile carrying Mentos for the hallucination. So there is something called highway hallucination. So just in this, not in the episode, while meanwhile going through, I will tell you what is riding hallucination. And update is the update is basically we are leaving at 14th August at night 12 from the meeting point is basically the Shyamnagar Reliance Jio petrol pump, those who know, and we'll start our ride. And we have a estimate ETA time to reach all the things. I will share the detail and how we used to ride, what are the gappings. Like many of the people have told like bro, like how to cover the things, like 200 kilometers is too much. First of all, if you are riding, guys, let me tell you one thing: don't ride for time, ride for fun, ride for enjoyment. If you wanted to go for like time balance and all the thing that I will cover this much distance in time, it will not help you enough, and it will be creating a tension, and it can lead to some major cause of accident or something like that. So prevent from that. I will share you, if you want to come to Sittong, what are the rules we are following, what are the things we are following. We are carrying some first aid, we are carrying some spare parts. Still now the packaging is left. I will do the all package and we'll see you in episode number 3. So let me tell you, alongside there is a thing we are using, as it is raining, we are carrying chain lube. So let me tell you, I am having the chain lube of BMW. This is official BMW product, and you can see the BMW symbol, and it cannot be bought from any vendor or something like that. So this is there. Alongside we have Motul. You can see this is the Motul one, MC Care, and it is also chain lube, not the chain cleaner. You can see it's a chain lube. And alongside we have the Maxima chain lube. So what I preferred out is that Maxima does not give too much performance. It is for the low budget Splendor or something like that. You can use it in your low car, low bike or low segment. Preferred is Motul. It will cost nearly about 250 rupees one. So you can carry. I am going to carry this one as a chain lube, and I am going to carry WD-41 for my preference, because it's raining. We don't know, anytime any can happen. Also I will give you the list of spare parts, like what needs to be carried off and what needs to be not carried off. Let me tell you, we used to carry spare key, we used to carry torch, we used to carry some clutch cables for the safety purposes. Like at a sudden moment, if something went wrong or something went on, so what you will go. So some spare part which you know that can be carried off, or which are like okay we have to carry, then definitely carry it out to prevent the things. Like one of my teammate who is going to ride with a Hunter 350, for the safety purpose he is carrying one extra tube also, because he is a tube tire, so he is carrying the tube. So the requirements is basically depending on people to people, but yeah, definitely you can make a requirement list. For me, I will give you the requirement list, what we are actually carrying, and everything will be mentioned in the description. So please hit the subscribe button, because this North Bengal, particularly the Sittong side, is going to be the fun and also the experience for everyone who are starting the riding in a very early stage. सो गाइस, हमारे पास आ चुके हैं पीट्रॉनिक्स का मशीन ऑलरेडी, एंड ये टायर इन्फ्लेटर मशीन है. लेट्स हैव अ टेस्ट. आप देख सकते हो मेरे हाथ में है, तो अपन BMW के उसमें चेक करते हैं कि भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता है. सो लेट्स चेक इट आउट. ओके, सो अभी जा रहे हैं
मम्मी भी जा रही है एंड ये पीट्रॉनिक्स के साइड से ब्लैंकेट से ऑर्डर किया गया है। এটা আমি পড়বো। सो लेट्स चेक आउट। आप देख सकते हो पूरा ऐसा दिखता है एंड इसमें टॉर्च भी दिया है। ये देखो এটা আমাদের টর্চ হয়ে যাচ্ছে। এক কাঠের দোকান হয়ে যাবে। सो आप देख सकते हो इसमें टॉर्च भी है। सो लेट्स अभी आप लेट मी टेल यू ओमा এগুলো দাও দরজাটা মানে দিয়া না এই দরজাটা দিয়ে দাও। हेलो सुमन, हाय क्या चल रहा है ये? कुछ नहीं, ये पीट्रोनिक्स का नया मशीन आया है तो वही चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि प्रेशर ऑलरेडी 37 है तो मेरे पीछे 40 प्रेशर रहता है। तो हाउ टू यूज़ इट आप देख पा रहे हो। नीचे इसको मैं 40 सेट करने वाला हूँ अभी एंड जस्ट ऑन इट। ओके, ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो इसका TPM मीटर जो है ये अप हो रहा है एंड इट इज़ फॉर बाइक प्रेशर के लिए, बाइक टायर का प्रेशर के लिए है ऑलरेडी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो ये कौन सी कंपनी का है? ये पीट्रॉनिक्स का है, ऑर्डर फ्रॉम ब्लैंकेट, ओके, राखी गिफ्ट के हिसाब से। सो आप देख पा रहे हो 40 प्रेशर ऑटोमेटिक हो चुका है एंड इट्स डन एंड इट्स वेरी इजी टू रिमूव ऑल्सो। इट इज हैविंग द क्लिप ऑन सिस्टम। सिंपली आप क्लिप आउट कर दो, आपका ये निकल आएगा। मुझे लगता है ये बहुत ही इजी टू कैरी है, लाइट वेटेड है एंड हाउ मच इट कॉस्टेड? It cost nearly about 1,800 something, like 700 something. सो गाइज आप देख सकते हो ये बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत ही इजी टू कैरी है, अफोर्डेबल है। तो इसके साथ ऑलरेडी पिन्स वगैरह बहुत कुछ मिला हुआ है तो विल शो यू दैट ऑल्सो। बट फिलहाल के लिए गाड़ी को थोड़ा सा आगे करके रखते हैं एंड इसको भी इधर रखते हैं। ओके बाय।